बचपन में जब पढ़ाया गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो वर्ल्ड की पूरी ऑक्सीजन में 20% अकेले कंट्रीब्यूट करती है और जो इतनी बड़ी है कि 8 देशों में फैली है, तब उन छोटी छोटी चमकती आँखों ने ये सपना देखा था कि एक दिन मैं भी वहाँ जाऊँगा। भारत के एक कोने में बैठा ये बच्चा आज 30 साल बाद अपना ये सपना पूरा करने चला था। अमेज़न एक जगह नहीं थी, एक सपना था। कीटो से एक ओवरनाइट बस जर्नी कर हम पहुंचते हैं एक छोटे से टाउन लागो आग्रियो। यहाँ पे वील टेक अ क्विक मोमेंट टू एक्नॉलेज एक्वा ट्रैवलिंग, जिनके साथ हमने अपना पूरा इक्वाडोर प्लान किया। They were our one-stop solution for everything Ecuador and they did absolutely great। तो लागो आग्रियो से हमारा सफर शुरू होता है इक्वाडोरियन अमेज़न की तरफ। कीटो से we have reached to लागो आग्रियो। एक वैन में ऑन रोड करीब 3 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचते हैं टू द गेटवे ऑफ अमेज़ोनिया। This is by far the remotest I have ever traveled, because after getting down from the bus, we have been on roads for another 3 hours in this van, and then we're gonna be on the river for another 3 hours to reach our lodge in the Amazon. So it's going to be an epic adventure. So we have never traveled so much remote to reach a place. Once we got down from the bus at Lago Agrio, that was a 8-hour bus ride from Quito, and uske baad we've reached this place now, which is probably the entry to the Amazon, and this took 3 hours on road by a van. So we were there in the van for another 3 hours, already burnt, but that's okay. And ab yahan se hum water canoe lenge till the lodge where we are booked, and that is for another 3 hours. So इतनी मेहनत करी है हमने यहाँ पे आने के लिए। आई एम सुपर श्योर कि इट्स गोना बी वर्थ अ लाइफ टाइम। सफर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे हमने ली एक मोटराइज्ड बोट जिसको कनू भी कहते हैं। Another 2.5 hours in कनू एंड हम फाइनली पहुंचे अपने खूबसूरत इको लॉज वाइटा में।
And we're here at the destination. Orko, make sure you give back the cap to him. Looks beautiful. That's our house. This is the main cabin. As you can see, this is the place where we have the couch, we have our library, where we have some books, ecology books, and books in general. Like also, we have some hammocks. In front of your room, you find a hammock as well. Over here, we have this plastic box where if you have food with you, snacks, or maybe fruit, we recommend to leave it here. Because if you leave in your bags, you're gonna have some visitors, maybe ants, which is the most common, but maybe other animals. That's why it's better to leave it here. See? Something is not included in the price of the tour. Things we have at the bar, like wine, rum, whiskey, those things. See? If you want them, here's a book where you can write your name and last day you pay. Water in your room is from the river. That water is good for shower. You can brush your teeth, but for drink, just this water. Okay? Don't forget, 24 hours free. Also, here we have in this other container hot water. Okay, you want to prepare coffee, tea, chocolate. And in these ones here, you have a coffee, chocolate, milk, sugar. After to use, don't forget to close. Otherwise, you can find some ants. Okay? Here's our cook, Beto. He prepared an appetizer for you. We don't have vegetarians, vegans, gluten-free, something like that. There is cheese and also is hot sauce. See? And that is plátano maduro. See? And right here we have the spoons just in case. Well, that is for the tea. Also, you have different types of teas. See? Just please the plastic or the paper of the tea put in that container. See? Electricity here we have in the morning around 7:30 a.m. to 7:30 a.m. to 10 a.m. In that time, we have also between midday to 2 p.m. and we have around 5:30 p.m. to 10 p.m. See? Please, in that time, if you have to charge your electronic stuff, use that time. This is how the lodge looks like. We have different huts around. And this one is ours. We have 2 hammocks as well. Orko is happy. Gracias. Let's just close this, Orko, before anything. So this is our lodge. So अभी electricity है नहीं because electricity बहुत limited time के लिए होता है. So it's around 3:30 p.m. right now, and the next electricity will come at 5:30 p.m. So we have a single bed around. So I think we'll sit around इस पे. उस पे हम सोएंगे, and obviously the net will be down when we're sleeping. This is our bags, a little table, कपड़े रखने का जगह, और ये है washroom. Okay, not bad. I want to take shower as soon as possible. हाँ जी, तो अपडेट ये है कि हम इतने देर से ट्रैवल कर रहे थे तो बोथ ऑफ अस वर टायर्ड एंड क्रैश्ड फॉर सम टाइम आफ्टर टेकिंग अ गुड शावर. फिर इवनिंग में उठकर बाहर जाकर वी सैट इन द कॉमन एरिया, जहाँ बाकियों से मिले, जान पहचान बढ़ाई, दोस्ती करी, बिकॉज वी वर गोइंग टू बी टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 4 days. उसके बाद डिएगो, द वन हु वाज गिविंग इंस्ट्रक्शंस व्हेन वी अराइव्ड, टोल्ड अस दैट आज रात में हमारा एक एक्टिविटी प्लान है विच इज़ द नाइट वॉक. सो डिनर के बाद करीब रात के 9 बजे हम निकल गए एक शॉर्ट क्रिस्प नाइट वॉक के लिए. And you can see also the chilicedos, which are the teeth of them. Look at them here. It's very nice. Very. That's a group of roots like a nest. For example, here, if you disturb them, look, they come out. That is the goal. That is the reason why some plants create these special roots, because the ants, they can be the army of them and protect them. Like right now, you see, when I start moving, they are very angry.
ready to attack. देखो भाई, रात को जंगल में ऐसे जाने में डर तो लगता है, फर्स्ट टाइम स्पेशली, बट इन 4 दिनों में जो हम अमेज़न में बिताने वाले थे उसमें हमने ये तो फॉर श्योर जाना कि आप अपने गाइड पे पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। दीज गाइड्स आर बेसिकली नेचुरलिस्ट जिनको बहुत ही ज्यादा आइडिया होता है उनके सराउंडिंग्स का, सो वो आपको बहुत ही सेफ कंडीशंस में लेके जाते हैं फॉर वेरियस एक्टिविटीज। जैसे हम यहाँ पे 30 मिनट्स के नाइट वॉक के लिए गए थे और काफी सारे नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स हमने देखा, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉग, ग्रास हॉपर, बुलेट एंट्स, इनफैक्ट स्नेक्स भी। बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। काफी कुछ हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं जो हम फील करते हैं इन जंगलों में। सो आज के वीडियो के लिए हम आपको इसी नाइट वॉक के साथ छोड़ेंगे। आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में अमेज़न में क्या क्या किया ये दिखाने के लिए। अब तक के लिए स्टे ट्यून, आई विल सी यू गाइस सून।